Okay, so our quiz app is ready. So if you see, the question and answer has been loaded. So let's start 1 by 5. So the first question out of 5: what is the capital of India? It's Delhi. Who is the PM of India? It's Modi. 2 + 3 is 5. What comes after January? It's Fab. Which company Pankaj is currently working? So if you don't know Pankaj, you will not be knowing this. So let's put Oracle. So you have scored 4 out of 5. So the last question, it should be L&T. Let's play again. So what is the capital of India? It's Delhi. Who is the PM? Modi. 2 + 3 5. What comes after January? It's February. Which company Pankaj is currently working? L&T. So congratulations. So guys, today we are going to build one quiz app. Okay, so basically that will be a multiple choice question quiz app. So once you select the question, so based on your response, if your response is correct, you are going to get the your marks evaluation at the end. And yeah, we'll try to like provide some feature from where you can replay it, or you can just retry the quiz again. Okay, so let's start. So for that, what I can do is I will be creating a new folder for that. So let's create a new folder called quiz. Let's call it as quiz component. Okay, component, right? So inside that हम क्या करेंगे, we'll be having just two files. एक file होगा JS file, और another file will be your CSS file. So for CSS I'm not going to like write the complete thing from beginning. I do have the CSS file, so I'll be just using that file to like give a proper designing. तो चलो क्रिएट करते हैं अपना JS फाइल पहले, जिसमें हम सारे लॉजिक्स लिखेंगे. ठीक है, सो लेट्स राइट हियर प्लीज. Okay, first thing what we can do here is as usual. So I'm going to make it using functional component. I will be using the use state hook. The name will be quiz comp. I'm going to use that fat arrow function. Okay, and then I will be simply writing one return statement, and inside return will be writing simply div quiz app. So this is something you are going to see for now, but we are going to build our logic. So first thing, let's export this. Export default your component name quiz comp. Okay, now since you have exported it, you need to import it as well, right? So you need to import it inside this app.js. So let's write import quiz comp, and then you need to call it, you need to call this. Okay, that's done. Close it. Now what happened, you need to start the terminal, you need to start the browser from the terminal so that you can see what is the result you are getting. So let's execute our command npm space start. It's going to start the browser. So as of now we are going to see this one only, quiz app. Okay, we are going to build our logic, right? So if you see, you are seeing the quiz app. Now let's build our logic. Okay, so let's start. So first thing we need to build is our question bank. Okay, so let's build our question bank where we'll be having the questions, and then based on the response we are going to evaluate. Okay, so let's start where, let's give it as question bank. Okay, now here what we are going to do is the first thing will be your question, right? So let's write question. What question I gave, what is the capital of India? Okay, and then we are going to provide 4 options. Okay, so for that what we can write is answer text. Okay, and that should be your array. So inside this we are going to write 4 stuff. So here you need to provide the comma also. So inside the answer text you're going to have the answer, and this answer is correct or not, right? So you need to write those things also. So in answer you'll be writing Delhi, and then is correct. So is correct is some like flag I'm going to use in the logic for the next part, like I mean in the next logic building, to check whether this option is correct or not. So is correct, I'm going to make it as true. Okay, यहाँ पे comma दे दो, right? So similarly I'm going to prepare 4 options. Okay, तो उसमें क्या होगा कि I'm going to provide three answers as wrong one, because
ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना। तो दिल्ली दे दिया, लेट्स गिव पुणे, लेट्स गिव रांची, लेट्स गिव पटना। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल नहीं हटा है, राइट? तो मैं इसे लिखूंगा फॉल्स, लिखूंगा फॉल्स, एंड देन इसे भी लिखूंगा फॉल्स। ओके, so similarly what you have to do is, so this is your first set of question and answer, so you need to prepare few more, right? Let's prepare few more, copy paste कर दो यहाँ पे, ठीक है, and then you need to change the question as well। तो यहाँ पे लिखते हैं who is the prime minister of India, so who is the PM of India। ओके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अमित शाह, जो कि नहीं है, so ये is correct will be or false। Let's give Modi, so Modi है, right? तो just make it true, then you can make it Raga also, so Raga is not the PM, then you have Kejri, the other potential candidate, तो इसको भी false ही देना है मेरे को, ठीक है। Okay, let's write it false here। Now the next question what I can write it, चलो मैथ से कुछ दे देते हैं, 2+3 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें चलो ले लेते हैं 5, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 3, राइट? इसका आंसर 5 होगा, तो 5 में ट्रू कर दो, बाकी में फॉल्स कर दो, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन ही लेते हैं हम, बाद में विल बिल्ड मोर क्वेश्चन टू लाइक have a more number of question। ओके, तो अभी के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लॉजिक बिल्डिंग। तो ये तो कंप्लीट हो गया ना, क्वेश्चन बैंक इज डन। यू वांट टू सी द क्वेश्चन बैंक, लेट्स सी console.log, let's take this question bank and see what is the question you are getting here। You need to inspect it and see, go to the console, see array you are getting of 3 size. The first one is, what is the capital of India? Okay, this one, then this one, so everything you are getting here, right? That should be good enough. Let's remove this part। Okay, now let's build our logic। Okay, so what I told you is we are going to build it using the use state hook, or you can say the hooks। So let's import that use state। Okay, now what I can do here is I will be writing, so I will be using 3 variables. One variable to hold the current question, and the I will be setting it to the next question also. The second variable will be your score. So what is your score? So whenever like someone is so what happened, like we are just changing the state of everything, be it's a number of question or be it's like a score, whatever. So for that we need to take the variable. Okay, so for that what we can do is, let's take this, I'm writing here, so I'm using this use state hook here. Okay, so let's write const, this will be your question, or you can give it name as current question also, and then so this is the current state, so the next state will be your set current question. Okay, so we are basically setting the current question. So let's say you have already answered the first question, then your current question will be your second one, so this is what we are going to set it. So right, use state, so the initial current question number will be let's make it a 0। Okay, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। Okay, the next thing is your score, so let's write const score and then set score। Okay, तो अभी का स्कोर भी कुछ भी नहीं है, so we are going to set it as 0। Okay, एक चीज और है कि लेट्स से यू एंड अप एट द लास्ट क्वेश्चन, यू ऑलरेडी हैव आंसर्ड द लास्ट क्वेश्चन, देन हमें स्कोर भी तो दिखाना है ना। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज वन थिंग दैट इज कॉल्ड शो स्कोर। ओके, तो पहले 5 क्वेश्चन के लिए शो स्कोर फॉल्स रहेगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जैसे ही मतलब लेंथ और ये नंबर ऑफ आई मीन लेंथ और नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे, सेट स्कोर को ट्रू कर देंगे, सो दैट ये आपका शो कर दे स्कोर। ठीक है, सो लेट्स मेक अ स्कोर और नो शो स्कोर एंड देन हियर सेट शो स्कोर। ओके,
तो स्टार्टिंग में मुझे इसे फॉल्स रखना है, ठीक है, बिकॉज मैं स्कोर शो नहीं करना चाहता जब तक मतलब आप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए हो। ठीक है, तो यूज स्टेट यहाँ पे मैं फॉल्स डाल देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, सी वी आर गोइंग टू सेट दिस शो स्कोर, राइट। तो अगर शो स्कोर कब सेट कर रहे हैं हम लोग, आई विल बी राइटिंग दैट लॉजिक व्हेन वी आर सेटिंग, बट एज पर नाउ लाइक यू अंडरस्टैंड, okay, so as per now you understand that if this source score is true, okay, that will only happen if you already answered the 5 question, then I'm making it as true, okay. So let's write one logic. If source score is true, okay, then we are going to do something. So we are going to show the score here, okay. So I'm just writing here, I will be writing the logic now also. So source score, अगर ये वाली false हो गई, ठीक है, सो अगर ये वाली false हो गई मतलब शो स्कोर false है, ठीक है, अगर ये शो स्कोर false है, then I'm going to do something here. So that is something I'm going to answer the question. I'm going to load the question, I'm going to answer it, okay. So just write the real logic here, okay. So ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, right. So let's do one thing, okay. Let's do one thing, let's write if, okay, come on. So div में हम क्या शो करेंगे, your score. So what is the score you have like achieve, okay. So you can write you have scored how much. So you have scored share. So I'm already setting this variable, right, a score. So this will give you the score. So a score out of, so what is the total number of questions that we can get from this array. So you do have a question bank as an array, so if you do array dot length, you are going to get it, okay. So where am I, so here, right. So question bank dot length, okay. So this will give you the overall score. Now that part is done, okay. Now let's come to this part, okay. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I will be loading the question and I will be clicking on the button, or I will be clicking on the answers and I will be like evaluating my response, okay. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, I will be writing this one, okay, और इसके अंदर मैं लिखूँगा div, okay. So this particular thing you can just think of something like, if I can give the class name, then you can think this for the question one, okay. You can say overall question, ठीक है. Now इसके अंदर मैं क्या करूँगा, I will be defining one more div. So this will be your for, okay, क्लास नेम. ये होगा क्वेश्चन नंबर के लिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, और एक और मैं लोड करूँगा, एक और मैं div लिखूँगा, दैट विल बी देयर फॉर योर आई मीन क्वेश्चन. सो दैट विल बी योर क्वेश्चन टेक्स्ट, यू कैन से, ठीक है. नाउ लेट्स राइट आवर लॉजिक. तो जो क्वेश्चन नंबर होगा वो क्या होगा, ओके. सो दिस विल बी योर स्पैन, okay, and your question number will be so I'm going to write something like 1 by 2 1 by 3 1 by 4, right. So ये होगा your current question, ठीक है, and then divide by your question bank dot length, okay. तो जैसे तभी तो ये शो करेगा 1/5 2/5. So that should be fine. ये k कहाँ से आ गया भाई, okay. So I think that should work, ठीक है. तो एक सेकेंड, ये जो स्पैन है ना, इट विल बी बेटर इफ आई एम गिविंग इट हेयर, कि अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, देन दैट वुड बी गुड, ठीक है. अदरवाइज इट लुक्स गुड, ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन टेक्स्ट. क्वेश्चन टेक्स्ट भी तो हमें लोड करना है. अभी तो ये 1/5 शो करेगा, लेकिन वन में कौन सा क्वेश्चन है, कैसे शो करोगे, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई विल बी यूजिंग दिस क्वेश्चन बैंक एरे, ठीक है, एंड देन आई विल बी पासिंग दैट इंडेक्स एज द करंट क्वेश्चन, okay, and then dot. So what is the text I have written here, so if I'm writing dot question, it is going to load the question, I mean exact question text. ये सब कहाँ चला गया, ये यहाँ पे लिखना है ना मुझे क्वेश्चन, ठीक है. So it will show you the question, right. Now let's come to the answer part. So I need to load the answers option also, right. So let's write one div, okay, और यहाँ पे हम लिखेंगे
So basically you want to load the answer in the buttons, or you can say answer in the button, but answer text as a button, right? So for that, let's give the class name as something answer. Okay, I will be changing it later based on the CSS. Okay, so यहाँ पे हम क्या करेंगे? So basically you need to loop through the answers because you have 4 options. Okay, so you'll be using map function. यहाँ पे हम क्या करेंगे? You'll be writing question bank, then you'll be passing the current question. Okay, ये पास करने के बाद you need to write this one, this particular part dot answers. Okay, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन चला गया क्या? Should have thrown the answer and error. Come on, करेंगे भाई. ठीक है. So current question dot you need to write answers. Okay, and then dot map function. Okay, यहाँ पे you'll be passing answer. Okay, so this is just like if you have written answers, it is going to loop through 4 answers. Okay, so यहाँ पे हम क्या करेंगे? I'm going to use a button click. Okay, so all your 4 options will be coming inside a button. ये बटन हो गया. ठीक है, so बटन का कुछ वैसे नाम वगैरह नहीं देना है. ठीक है, so simply you need to write I'll be writing one on click function or on click event, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? I'm going to call a function जहाँ पे सारा लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, तो handle answer response that I can give. Okay, और इसमें मेरे को एक पास करना है. You can say you will be passing something as an argument. So what you need actually, so when you are looping through all the answers, all the 4 options, you need to pass which option is correct. Okay, because based on the user response, if he's clicking on the zero, I mean if he's clicking on the correct option or not, I need to increment the score also. So for that I will be passing here something called your answer, because answer has two property. One is your, so this one has two property, answer dot, so answer as well as is correct. Okay, so when I'm writing answer, it is taking this particular stuff, so it has two property, answer as well as answer is correct. Okay, so let's write here, so answer dot is correct. Okay, so that is done, so that should be good enough. Okay, and one more thing, like you need to you need to show the answer here also, right? So for that what you can do is here in the button as a text, you'll be writing something called answer dot answer. Okay, caps wala hai na yahan pe. So what is the text here? So it is answer, this one, copy this. Okay, ये क्या बोला? Question bank, what happened? Okay, question bank कहीं पे मैंने misspell किया गया इसे. Line number 60. Okay, कहाँ पे? Okay, handle answer response is not defined. Okay, so this function I have not yet implemented, so let me implement it first, then all the errors will be gone. Okay, now let's do that. Okay, so it's right here, const. Okay, I'm going to pass this is, so let's pass is correct. Okay, that is something we are passing from the below one, right? So it's correct. Okay, अब यहाँ पे हम दो चीज़ें perform करेंगे. The first thing is will be so basically we'll be doing all three here. Okay, so the first thing you need to take care here is, so if this one is correct, okay, you need to set the score with +1. Okay, so what you can do here is if is correct. Okay, अगर ये true है, then what you will be doing here is you'll be setting the score. So set a score. Okay, you'll be calling this function, I mean this particular function, and then you'll be writing set a score is equal to, I mean something like this, a score +1. Okay, so that is done. Now अगर ये correct होगा तो, so we are going to define one next question. So const, you can write next question. So that will be basically your current question +1. Okay, and then we are going to apply one logic here. So if your next question is less than I mean the length, so for here, for an example, you have written the question bank of 3 length, so you need to write question bank dot length. Okay, so for every question from 1 to 3, okay, so for every question from 1 to 3 you are going to set the
current question. So we'll be writing here set current question, and then you'll be passing. So either you can pass current question plus one, or you can pass the next question. Okay. So this is about the if. What if is the condition is false? Okay, मान लो कि you are already in the fifth question. Then क्या होगा उसमें? Next question will be your sixth one. For an example, अगर यहाँ पे ले लो, if you have if you have question bank of 3 length, तो यहाँ पे क्या होगा? If you are in the third question, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? उसका फोर्थ वन हो जाएगा, ठीक है? तो फोर्थ वन ये वाली कंडीशन को वायलेट कर देगा, तो उस केस में क्या होगा कि यू नीड टू सेट द स्कोर हियर, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रीच द लास्ट क्वेश्चन, सो यू नीड टू शो द स्कोर. तो उस केस में हम क्या करेंगे? विल बी राइटिंग यहाँ पे सेट स्कोर. ओके, तो सेट स्कोर को हम क्या कर देंगे? अब ट्रू कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही ये ट्रू होगा, दिस इज गोइंग टू, आई मीन दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू, एंड यू आर गोइंग टू सी दिस स्कोर. ओके, so question is not defined, line number 20. Okay, somewhere I have done some mistake. Line number, okay, not line number, line 49. Okay, it should be question bank, man, not question. It should be question bank dot length, because we want the length of the array, right? ओके, चलो ये सब हटा देते हैं, बिकॉज दिस इज, ये वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो ये एरर दे देगा या फिर लोड ही नहीं करेगा कुछ चीज़ों को, ठीक है? विल राइट दिस क्लास नेम्स बेस्ड ऑन द CSS क्लास. ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटेन दो CSS क्लासेस. चलो सारे डिफ क्लियर हो गई ना? अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया करंट क्वेश्चन. भाई साहब, करंट क्वेश्चन कैसे होगा? दैट विल बी योर क्वेश्चन बैंक, राइट? सो दैट विल बी योर क्वेश्चन बैंक. ओके, sorry guys, it was a mistake here. Okay, अच्छा, यहाँ पे 0/3 लोड कर रहा है, क्यों? You know that was in here. Current question is one unit right here. Okay, so what is the capital of India? Delhi. Then second question, who is the PM of India? Modi. 3 + 3 is 5. So you have scored 3 out of 3. ठीक है? लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दोबारा खेलने का प्रोविज़न ही नहीं है, ठीक है? तो इस केस को मैं क्या करूँगा? व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज, लेट्स डू वन थिंग. शिट स्कोर, राइट? यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट्स डू वन थिंग. लेट्स डू थिंग. भाई ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है? सो हियर आई विल बी गिविंग वन, सो जैसे ही ये शो स्कोर में जाएगा ना, आई विल बी गिविंग वन बटन, ठीक है? बटन जो होगा, दैट विल बी योर टाइप इज इक्वल टू सबमिट. ओके, एंड देन आई विल बी राइटिंग वन ऑन क्लिक फंक्शंस. जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा, ये दोबारा सारी चीज़ों को मैं रीसेट करना चाहता हूँ, ठीक? जस्ट राइट अ फंक्शन सेट रीसेट क्वीज, लिख दो ना, ठीक है? अब इसको हमें डिफाइन भी तो करना होगा ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होगी. लेट्स राइट कॉन्स्ट रीसेट क्वी इक्वल टू दैट एरो. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, सारी चीज़ें जो जो भी मैंने 3 फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन करा है, ठीक है? इनको मैं रीसेट कर दूंगा. सो सेट क्वेश्चन, ठीक है? इसको मैं 0 कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद सेट स्कोर है, ठीक है? इसको भी मैं 0 कर दूंगा, बिकॉज दोबारा से अगर कोई खेलता है तो उसे सब चीज़ तो फ्रेश चाहिए, है ना? और फिर क्या बच गया? सेट शो स्कोर. इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है? तभी तो ये जाएगा पहले वाले में. भाई साहब, ये वाली बटन दे. चलो इसको नाम दे देते हैं कुछ. क्या नाम दे दें? प्ले अगेन, ठीक है? चलो सेव कर. ये आ गया, ठीक है? अब इस पे जैसे ही प्ले अगेन करोगे, इट्स गोइंग टू टेक यू टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन. देखो, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? पुणे दे दिया. द PM ऑफ इंडिया, ढाका दे दिया. 2 + 3, इस बार मैं सारे फेल होना चाह रहा हूँ, ठीक है? 3 दे दिया. सो यू हैव स्कोर 0 आउट ऑफ 3, ठीक है? तो ये तो हो गई. अब इसका थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं. विल अप्लाई CSS here. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विल क्रिएट वन CSS फाइल. तो लिख दो यहाँ पे क्विच स्टाइल डॉट CSS. ओके,
ये हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास CSS फाइल है एक्चुअली, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक दिस CSS फाइल एंड गोइंग टू नाउ। अभी देखना है कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है इसको यहाँ पे। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज, आई विल बी राइटिंग, सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, आई हैव रिटन सो मेनी क्लासेस, ओके। सो आई विल बी राइटिंग दिस क्लासेस हियर, ओके। सो पहली चीज़ है क्या है, देख लो यहाँ पे, इफ यू सी दिस आई हैव सो मेनी क्लासेस, ओके। See, the first thing is your score section, okay. सो दिस इज ऐप, सो ऐप जाएगा यहाँ पे जो हमारा मेन डिव है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे चला जाएगा, क्लास नेम इज इक्वल टू, इट विल टेक ऐप, ओके। उसके बाद क्या है हमारा, जो ये है हमारा, ठीक है, ये वाली चीज़ ये आती है स्कोर सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई डू हैव अ स्कोर सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो इसको मैं लूँगा यहाँ पे, एंड आई विल बी राइट समथिंग कॉल्ड क्लास नेम इज इक्वल टू स्कोर। ये सारी चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज आई हैव नॉट इम्पोर्टेड दैट CSS, वो मैं कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ क्वेश्चन सेक्शन। उसके लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा है, दिस इज़ माई क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है। क्लास नेम क्वेश्चन सेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट है, तो इसमें हमारा क्लास नेम इज इक्वल टू, और यहाँ के लिए मैंने बनाया है ये क्लास, दैट इज़ योर क्वेश्चन टेक्स्ट। सो दिस क्वेश्चन टेक्स्ट, ओके। ये वाला जो है हमारा, दिस इज क्वेश्चन काउंट। So for that also I do have one CSS class. So this is your question count, right here. Now the next thing is the answer section. Okay. So for that I can take that class. That class is really answer section. You can apply this. So div class name answer section. ठीक है. तो ये हो गया. Now the next thing is this CSS properties will not be applied if you are not importing that CSS class. So you need to import as well. So import. What is that CSS class? That is called style, right? So quick style dot access. Okay, quiz component dot js. Okay, it is okay. So if you say this, now my quiz component is ready, my quiz app is ready. So see, कितना अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है. What is the capital of India? So it's Delhi. Who is the PM of India? So it's Modi. 2 plus 3 is equal to 5. So you have a score 3 out of 3. So if you want to play again, it's going to take you to the question. चलो एक we'll take some more question. Okay, so make it 5 count. थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या ले, what should be the question? यहाँ पे क्या ले लूँ? What comes after जनवरी, ठीक है. जनवरी के बाद क्या आता है? तो फेब आएगा, आएगा, जून आएगा, सितंबर, ठीक है. तो ये फेब वाली ऑप्शन सही होगा. एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे कि what I can take. So see, it has already taken the 5 because your question bank length has become 5. क्या ले लूँ? Take anything. Which company? Okay, so
Pankaj is working currently. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेंचर ओरेकल। चौथा ये बाय डोंट नो नहीं चलेगा ना, राइट आई। तो ये वाली अभी ट्रू है ना, मैं इसे ट्रू करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू लोड यू ऑल द 5 क्वेश्चन, लेट्स सी। So what is the capital of India? It's Delhi. What is the who is the PM of India? It's Modi. 2 plus 3 is 5. What comes after January? Okay, so it's February. Let's skip this as wrong one. So let's say March. Which company Pankaj is currently working? So it's L&T. So you have a scored 4 out of 5, right? So let's play again. So what is the capital of India? Delhi. Who is the PM of India? 2 plus 3 is equal to 5. What comes after January? It's February. Which company Pankaj is currently working? L&T. So you have a score 5 out of 5. Congratulations. So that is how we can build a quiz app.